अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि इंसान चांद पर कदम रख चुका है, लेकिन अब इंसान मरीख पर भी कदम रखना चाहता है। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी लड़की के बारे में बताऊंगा जो 2030 में मरीख पर जाएगी और कभी ज़मीन पर वापस नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको मरीख के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। मरीख हमारे निज़ाम शमसी का ही एक सियारा है और ये ज़मीन से बहुत मुशाबत रखता है। इसकी रंगत सुर्ख है। इसकी सुर्ख रंगत की बिना पर ही इसे सुर्ख सियारा भी कहते हैं। इसकी सतह पर ज़मीन की ही तरह वादियाँ मौजूद हैं और इसके कतबीन पर बर्फ़ जमी हुई है। मार्स के 2 चांद हैं जिन्हें फोबोस और डेमोस कहते हैं। ये चांद छोटे और बेतरतीब शक्ल के हैं। मार्स पर इंसानों के रहने के लिए तहकीक हो रही है। दोस्तों, आजकल अमेरिका और यूरोप के सैटेलाइट्स मार्स पर तहकीक कर रहे हैं कि मार्स पर इंसानों को घुसाया जा सकता है कि नहीं। अक्सर साइंटिस्ट का ख्याल है कि मार्स पर किसी ज़माने में ज़िंदगी मौजूद थी और मार्स पर पानी भी मौजूद था। आज भी साइंटिस्ट को ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि मार्स पर किसी ज़माने में दरिया भी बहते थे। अमेरिका 2030 में एक ऐसा मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है जिसमें वो साइंटिस्ट को मार्स पर भेजेगा जो वहाँ पर सारी ज़िंदगी गुजारेंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। इन्हीं में से एक लड़की के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो इस टीम में शामिल होगी और 2030 में मार्स में जाएगी। इस लड़की का नेम है अलीसा कैरसन। अलीसा अमेरिका में 10 मार्च 2001 को अमेरिका में पैदा हुई। अलीसा जब 3 साल की थी तो एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ बैकयार्डियन से बहुत मुतासिर हुई जिसमें ये कार्टून के किरदार मार्स पर जाते हैं। अलीसा के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी एक दिन मार्स पर जाएगी। और आपको मैं अलीसा के बारे में और बताऊं, अलीसा दुनिया की सबसे कम उम्र एस्ट्रोनॉट ट्रेनी है। अलीसा दुनिया की यंगेस्ट पर्सन है जिसने एडवांस स्पेस एकेडमी से ग्रेजुएशन की, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अलीसा को कुर्बानी भी देनी पड़ी है। अलीसा ना शादी कर सकती है और ना ही बच्चे पैदा कर सकती है इसे और ना ही किसी के साथ रिलेशन में रह सकती है क्योंकि ये सब इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। मार्स पर अलीसा अकेले नहीं जाएगी, इसके साथ इसकी पूरी टीम मार्स पर जाएगी जिसके बारे में आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। अलीसा मार्स पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेगी और ज़िंदगी गुजारने के बाद ये मार्स पर ही दफन होगी क्योंकि अमेरिका ने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जो इन साइंटिस्ट को मार्स से ज़मीन पर वापस ला सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। I definitely think that kind of the first thing that I would want to do when I get to Mars will probably just be like running around and just kind of like taking everything in. Even, looking for the Earth and the sky from Mars. Everything that we've ever known is just this tiny dot, and now here we are on Mars trying to learn even more. I'm Alyssa Carson. I am 18 years old. I am from Baton Rouge, Louisiana in the United States, and my dream is to be one of the astronauts on one of the missions to Mars. So I first got interested in the idea of space when I was around 3 or so after watching a cartoon called The Backyardigans. And the show is basically these characters who go on imaginary adventures every episode. And one of the episodes was called A Mission to Mars. And I even had like the poster of the episode hung in my bedroom. So after watching the show, my dad kind of remembers me asking him like, oh, are there people on Mars? Is space real? And then from there, my curiosity just kind of blew up with all these questions about space. The whole idea of kind of a mission to Mars and that being the aspect of space that I wanted to study and wanted to kind of be a part of really just kind of came with my studying of space in general. Mars is really the next place that a lot of people were talking about and looking towards, and it was the next place with all this interest. Mars is really the closest planet to us that we can get to and we can explore. So it's kind of just technologically feasible to do. Growing up, I got to see, Curiosity, which is kind of the main rover that is being used on Mars right now. I got to see that being sent to Mars and land and seen all the different discoveries. But with the technology and the rovers and all that we have there, things kind of move pretty slow in finding new things.
So with humans on Mars, we could go and find if there's bacterial life in the water. We could see if Mars could potentially be a second place for humans to live on, and seeing, how humans could adapt to Mars and just kind of learning a bit more about the history of it. At 15 is when I joined an organization called Project Possum. And Project Possum is actually this group of citizen scientists really studying clouds in the upper atmosphere. That's kind of their main goal. So with them, I was able to do really awesome training, such as microgravity training. The first time was just mind-blowing. I'd never felt anything like it. It's really hard to describe. It's just this amazing feeling that I'd never felt before. You start feeling it in your stomach. Eventually, your stomach starts getting a bit uncomfortable with it. But it's definitely a really amazing feeling to kind of simulate what I could potentially be living in the future. There's a lot of issues that we are currently facing to get people from Earth to Mars. The radiation levels between Earth and Mars, the development of a new rocket and capsule and creating all this new technology for this mission, and then understanding how we can live on Mars, since Mars is very different with, it doesn't have as thick of an atmosphere, it doesn't have oxygen there, so there's a lot of challenges that we've never experienced before that we're trying to learn and kind of figure out now before kind of the projected date of going to Mars, which should be around the early 2030s. Big picture here and kind of like the future for future generations, through kind of the study of other suns and planets, we do know that the sun eventually stops burning. Pushing for future space exploration is actually to continue the survival of humans in general. Definitely Mars isn't the ultimate savior here, because Mars is part of the exact same solar system, and so Mars would go along with Earth. But Mars is just kind of that first baby step in getting us to see that, yes, we do have the technology, we have the people, we have the capability. After we get there, kind of the hope is that another kid, possibly after me, has a dream to go to a moon of Jupiter or so on, till we actually become these kind of like sci-fi characters that we actually dream of. One of the biggest things that I'm super proud of is all of the kids that I've been able to inspire, because I definitely know me as a little 3-year-old saying I wanted to be an astronaut and go to Mars was basically the craziest thing I could have ever thought of. So seeing it become more and more of a reality has really showed me that, kids can follow their dreams no matter what they are.